Hey you guys, assalamu alaikum, welcome back to my channel. I'm Khadija, if you did not know that already. I'm coming back to YouTube after a while and I wanted to give you guys a little bit of backstory कि ये जो आप vlog देखने वाले हैं ये पिछले vlog के ही बाद का vlog है. फुटेज मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी एडिट करने का, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आपको पता होगा कि मेरे भाई की शादी थी तो मेरे पास फुटेज बहुत सारी थी और मेरे पास एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली वन वुमन शो चलता है यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. जो भी आप देखते हैं वो सब कुछ मैं करती हूँ, तो इसीलिए टाइम की ज़रा कमी हो जाती है. बट या आई होप यू गाइज एंजॉय दिस व्लॉग. इट्स अ ग्रेट वन एंड आई नो यू गाइज लव दिस काइंड्स ऑफ व्लॉग्स. शादी व्लॉग्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, मेकअप, आउटफिट्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन. सो एंजॉय दिस वन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ऑल ऑफ दैट फन स्टफ एंड आई एम सो एक्साइटेड टू बी बैक. You guys don't even know. That's the worst angle. Shut up. That's the worst angle in the history of angles. लेकिन बहन तैयार हो रही है, ठीक है. सो आई वेंट शॉपिंग टुडे. एक्चुअली अभी तो मैं काम पे जा रही हूँ लेकिन आफ्टर वर्क डायरेक्टली मैं शॉपिंग पे जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ. यार दिस इज सो अनप्रोफेशनल खदीजा, व्हाट द हेल. वेल आई एम नॉट प्रोफेशनल. सो अच्छा, तो आज मैं जाऊँगी शॉपिंग पे राइट आफ्टर वर्क, तो इसीलिए मैंने सोचा जस्ट प्रेफेस दिस व्लॉग अ लिटिल बिट. और सिंस यू गाइज लव शॉपिंग वाले व्लॉग्स तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी कर लेते हैं, बिकॉज मैं जा रही थी शॉपिंग पे बीच में लेकिन आई डिडंट वांट टू लाइक टेक माई कैमरा आउट एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज काफ़ी सारे मॉल्स में कैमराज ही अलाउड नहीं होते. सो आई एम गोइंग टू स्विच टू माई फोन. आई एम सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी बट जस्ट गोइंग टू हैव टू डू. लेकिन अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा दूँ. अच्छा, तो ये है मेरा आउटफिट. दिस इज़ फ्रॉम ईद ट्रेंड्स वाली वीडियो मेरी, और ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था. दिस इज़ ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और ये 2 डिफरेंट कपड़े लेके आए, गॉट देम स्टिच टुगेदर, बीच में बटन्स लगा दिए. वेरी वेरी सिंपल एंड आई एम वेयरिंग दैट विथ वाइट पैंट्स. और मेरे जो शूज़ हैं ये मैंने स्टाइलो से लिए हैं सेल पे. वेरी क्यूट, लव देम. अच्छा, अब मैं पहनूँगी कुछ रिंग्स एंड सम हैंड ज्वेलरी लाइक वॉचेस एंड स्टफ. और मेरा मेकअप मोस्टली हुआ हुआ है. लिप्स को मैंने बहुत न्यूट्रल रखा है बिकॉज ऑब्वियसली वी गोइंग टू वर्क एंड आई हैव आईलाइनर ऑन, सो दैट्स अ लॉट. तो आई स्नैच इट अप व्हेन वी आर गोइंग आउट शॉपिंग. सो हेलो जी, वेयर फ़ोन में आ गए हम लोग क्योंकि कैमरा तो अलाउड नहीं है. तो आई एम एट हैबिट राइट नाउ, जस्ट लाइक just to show you guys I'm actually at habit. I'm just shopping around for some stuff. Wait, charger की वायर बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी. But I'm at habit because I wanted to get some bits and pieces before I went back home, क्योंकि मेरे रूम में कुछ नई additions हुई हैं, तो I really want to get some nice little bits and leafy bits also, just to pep the whole thing up a little bit. और also habit पे काफ़ी अच्छी offers भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा you know what, this is the best time to do it. तो अभी मैं यहीं ज़रा रोम अराउंड कर रही हूँ और मैं आई थिंक अभी फ्रेम्स के आई थिंक क्या मतलब मैं फ्रेम्स के सेक्शन में ही हूँ. तो यार मैं लाइक how me is this? I cannot decide if I should get this or not, but it's really pretty and it's quite affordable too. मतलब 1390 का है और फ्रेम्स वगैरह भी काफ़ी अफोर्डेबल है. Oh yeah, that is a better angle. अच्छा, so I'm looking at a few frames right now. ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है. I cannot decide कि if I should go for the white one or not. This is why I need people to shop with me so I can like get some ideas. But this or this, pick one. I think I'm gonna get both because they look quite nice together. ये अंदर वाली जो रिम है इसके साथ मैच कर रही है. I think I'm getting this for sure. लेकिन I'm not sure about the other one. Also the store is really empty, so I'm really milking this the whole thing. ये कौन सा? This is the same one, right? No, it's not. It's not at all the same thing. Which one will go with this? इसके साथ कोई सा भी नहीं जा रहा आप उसके बाद. It's going to make much more sense when I show you guys my room. Really excited. Anyway, let's get on with the show. I'm back home for the weekend, you guys. और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट कर दूँ about my room and also कि मैंने habit से क्या लिया है. I'm sure you guys are nosy like me and you guys want to know कि मैंने habit से क्या लिया है. So I'm going to show you guys around a little bit and wait, that's the spoiler. I don't want to show you guys that first. अच्छा, तो शुरू करते हैं ज़रा यहाँ से.
Okay, so you guys know this wall, you guys know this space. A lot of people were concerned कि मैंने ये बेड इस तरह से क्यों रखा है और मुझे ये इस तरह से रखना चाहिए. My room is quite small. A lot of people wanted to point that out too. I know my room is small, you don't need to tell me that, but I'm very satisfied with it. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है. And I quite like small and cozy rooms. तो मुझे इतना कोई ख़ास मसला नहीं है कि मेरा इससे 5 गुना बड़ा कमरा हो, जो काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि हमारा तो इससे इतना बड़ा कमरा है. Congrats, I guess. और नई जो अपडेट हुई है since we last talked are these curtains. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस प्रिंट. मुझे इसी तरह का कुछ बिल्कुल प्लेन बट ऑल्सो जोमेट्रिकल किस्म का चाहिए था. एंड आई एम सो ग्लैड आई फाउंड दिस कपड़ा रैंडमली एक दुकान पे और मैंने उठा लिया फ़ौरन से. एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना गेट कर्टन्स मेड आउट ऑफ दिस. वैसे मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ प्लेन वाइट कर्टन्स, लेकिन आई फेल इन लव विद दिस प्रिंट. दे एड अ लॉट टू द डायमेंशन ऑफ द रूम बिकॉज वी आर प्लेइंग अराउंड विद ग्रे ब्लैक वाइट. इस तरह का ही सीन है. विद द बेड मैंने अब इस पर वाइट बेडशीट बिछा ली है. एंड ऑब्वियसली लाइक लीव्स और यू नो प्लांटर्स वगैरह तो काफ़ी सारे हैं ही हमारे पास. तो दैट्स वाई आई जस्ट हैव दिस प्लेन वाइट बेडशीट. बट द बेस्ट थिंग अबाउट इट इसकी ये बिल्कुल होटल वाली प्लेन नहीं है. बाय द वे आई गॉट फ्रॉम अलकरम. अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी. And these cushions are from AliExpress, like the cushion covers. उसके बाद we turn to look at this corner, जो कि मैंने अपना जो रग था वो मैंने इस कॉर्नर में रख दिया है because I'm going to get a standing mirror यहाँ पे too, and the plant is going to sit by it. और एक छोटा सा ottoman भी मैं इधर रख दूँगी. And we have the same curtain right here, छोटी सी खिड़की, छोटा सा curtain. एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली कोजी कॉर्नर. मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला अभी तक कि मैं मिरर्स वगैरह का सॉर्ट आउट कर सकूं, क्योंकि उसके लिए आई नीड टू गो इन पर्सन एंड चूज द मिरर्स एंड ब्रिंग देम होम एंड थिंग्स लाइक दैट. और मैं कराची से भी नहीं ला सकती बिकॉज कौन इतनी ख्वारी करे. बट द पार्ट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर, पहले मेरा बैकग्राउंड हुआ करता था विद द मिरर एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज द रैक आई गॉट इट. लुक एट हाउ प्रीटी दिस लुक्स. आई एम ऑब्सेस्ड. सॉरी, ये मेरा हेयर ड्रायर इधर एस्थेटिक को ज़रा ख़राब कर रहा है. सो वन टेक यू टेक 2. सो दिस इज़ वॉट दिस एरिया इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ. मैंने हैबिट से जो सारी चीज़ें ली थी वो इसी रैक के लिए ली थी, एज आई वाज सेइंग इन माय प्रीवियस क्लिप. रैक है ये, मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइन देखा था और आई गॉट इट मेड फ्रॉम द कारपेंटर जो हमारे घर पे काम कर रहे थे. आई जस्ट आस्क्ड देम टू मेक दिस इन द सेम कलर जैसे मेरा सारा का सारा फर्नीचर है. सो इट जस्ट गोज़ टुगेदर विद एवरीथिंग और ज़्यादा ये स्क्रीम आउट भी नहीं करता एंड स्टिल लाइक स्टेटमेंट पीस. और इसके लिए मैंने जो पीसेस लिए थे वो पहले तो एक फ्रेम है. दिस आर जस्ट वेरी बेसिक. इसमें ऑब्वियसली मैंने पिक्चर्स नहीं रखी हुई. आई एम गोइंग टू चेंज दीज, लेकिन दिस इज़ वेयर इट्स स्टेइंग राइट नाउ. एंड आई ऑल्सो गॉट दिस टाइनी लिटिल planter. It's fake obviously and it looks super cute. Then I got this candle which is big boy or goes with my wall. So that's why I got it. And it smells amazing as well. इसमें lavender वगैरह है. तो and then I got this white frame. ये भी habit से है. पीछे वाला planter है, ये पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था. But yeah, this is what we're looking like right now. यहाँ पे भी एक mirror आएगा. This is like my vanity space. ये जो नीचे drawers से पड़े हुए हैं, this is where I store all of my makeup. If you've not seen my makeup collection वाली video, उसका मैं link description box में दे दूँगी, so you can go check that out. लेकिन this is supposed to be my vanity. यहाँ पे there's a chair that goes in there, लेकिन वो भी बाहर पड़ी हुई है क्योंकि मेहमान वगैरह आ रहे हैं काफ़ी सारे. But this is the stuff that I have out right now. I mean, this isn't a part of this, but this is the stuff that is out right now. काफ़ी थोड़ा सा सामान है क्योंकि मेरा ज़्यादातर सामान कराची पड़ा हुआ है. बट या यहाँ पे लगना है एक मिरर. मेरे से डिसाइड ये नहीं हो रहा कि मुझे सर्कल मिरर लगवाना है या रेक्टेंगल. मेरी खाला कह रही थी कि आई शुड गेट लाइक इस शेप के मिरर्स. So that's also a cool idea, but I'll see कि किस तरह हो सकता है. ये चीज़ें मुझे मिलती भी हैं या नहीं, इस पे भी बड़ा डिपेंड करता है. But yeah, इस तरह के जो shelves हैं, by the way, I saw them at Habit and also some other furniture की दुकानें जैसे Interwood पे भी you can find them probably, or you can get them made from any carpenter as well. You can totally screenshot from this video and show this to someone, या Pinterest पे ढूंढ सकते हो and things like that. And also सामने मुझे देख के याद आया, I do have a wardrobe in my room, guys. A lot of you guys were asking कि खदीजा, you don't even have a wardrobe in your room and like what sort of a room is this? I have a whole ass wardrobe. अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है.
प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, आई हैव अ होल वार्डरोब। ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि ये काफ़ी एक बोरिंग स्पॉट है रूम का, एंड आई हैवंट रियली डन मच टू इट। तो ये सारी एक स्ट्रिप है, दिस इज वेयर आई मोस्टली वर्क, दैट इज माई अपडेटेड रूम टूर, जो मैं सारी बातें बता रही हूँ कि मिरर्स लगवाने हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइफ, थिंग्स कीप ऑन गोइंग। बट मैंने सोचा कि सिंस आई एम गोइंग टू बी व्लॉगिंग, तो आई फिगर्ड कि पहले मैं आप लोगों को अपना रूम सही से दिखा दूँ, so you guys are, you know, finished with that chapter. That was my phone. Ugh, the moment of truth. Oh my god, I think I cracked it. Later I need to get इसका protector changed too क्योंकि काफी गंदा हुआ है. But yeah, anyway, तो आज basically मैंने थोड़ी करनी है card, and I also have to open an advent calendar makeup revolution का जो मेरी खाला लाई थी, so I'm gonna open that with you guys. But yeah, I think that's going to be all. Let's save that here. Small boy. तो ये सब खोले चल पा रही है मतलब नॉर्मल मानो जो केनु एकड़े के नहीं है ते एकड़ो एकड़ो खोली पर हाँ नॉर्मल खोलने में छोटी क्या ना जो देखो ये तो हम करेंगे। और देखें जी माशाल्लाह कोई वादा खिलाफ़ी नहीं हुई। मैंने कहा था कि इनविटेशन कार्ड्स में लिखूंगी और वो मैं अभी लिख रही हूँ। ये टाइम लैप्स का कोई मकसद नहीं है ख़ास, इट्स जस्ट दैट आई सेड कि मैं लिखूंगी और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये एंजॉय करें आप, आपकी व्यूइंग प्लेजर के लिए है। And you've made it to the end of this vlog. Thank you so much for watching. You guys are the best. जो end तक देखते हैं वो वाकई बहुत बेस्ट होते हैं. I just wanted to say that a huge thank you to all of you who stuck by me through the gap as well. And I just wanted to say happy new year to all of you. I hope जो भी resolution आपने रखी हो वो आपकी पूरी हो और आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा गुजरे. At least पिछले से तो बहुत ही बेहतर गुजरे. Yeah, I hope you have a great day and I'll see you guys very 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 soon. Bye.